Hello friends, welcome back to our channel Let's Crack OPSC. Hope all of your preparation going well, and I hope you people are preparing really well for the upcoming prelim examination. आपण माने जेमिति जानिथिबे कि आमे ऑलरेडी शेड्यूल देइथिलु आ बहुत जण आपनक मध्यरु बहुत जण हमर प्रीलिम कम मेन बैच एंड प्रीलिम टेस्ट सीरीज एंड प्रीलिम कम गाइडेंस प्रोग्राम जॉइन करिसंती एंड आज हमर फर्स्ट टेस्ट पॉलिटी अपलोड हेतिला एंड आई होप यू पीपल हैव परफॉर्म रियली वेल. बहुत जण मध्य हमकु स्कोर कहिसंती केते जण किंतु बहुत जनंगर किछि प्रॉब्लम रहिछि which we will be discussing. Friends, we will be discussing very and many of you who are willing to join our test series, please join as soon as possible. It is going to be a very high standard OPSC standard test series, and you will be getting the high quality questions and answers with explanation. मु बहुत इम्पोर्टेंट गोटे मेसेज दबाउ चाहूँगी आमर जेतिकी सबू स्पेशली आमर जो क्रैकर ग्रुप अच्छी डू कीप ऑन राइटिंग व्हाट एवर थिंग्स वी आर पुटिंग in the cracker group so that you will be able to revise all those before interview. This is very important. Friends, today we will be discussing our test series important the thing that is very important today's test series. The first question is, consider the following. A constituent assembly to frame a constitution for the India was first demanded by Muslim League in 1934. The Indian National Congress was opposed to the idea of the constituent assembly elected by adult franchisee. एटा क्वेश्चन टा पचारि कि एटा भितरु कोटा राइट आंसर. आपण जानथिबे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थिला एंड इट इज गिवन दैट आंसर 1 ओनली 2 ओनली बोथ एंड नेदर. आपण जानथिबे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थिला सी फर्स्ट रे डिमांड करथिला द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो, नॉट मुस्लिम लीग. सो स्टेटमेंट 1 इज रॉन्ग and it is Indian National Congress. तो एटा 1934 हबनी, एटा Indian National Congress 1934 हबो ना कि Muslim League. Then Indian National Congress was opposed to the idea of constituent assembly, which is again a wrong statement. So answer will be 1D. Already आपनों को आंसर दिया जाइछि. आंसर की से आंसर की जो दिया जाइछि से आंसर की टा ठीक से आपण फॉलो करंतु एंड इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल. जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है सेटा आपण ठीक से रिवाइज करले इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल टू फॉर यू. मु बारंबार एम्फासाइज करबी पॉलिटी रो आमे वेरी हाई स्टैंडर्ड ओपीएससी स्टैंडर्ड रो बनौछु. एई जो 100 टा क्वेश्चन अछि आ तार जो हमरो जो एक्सप्लेनेशंस अछि आपण ठीक से रिवाइज करंतु. 3 रु 4 टा क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विल बी कमिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट. I am repeating 3 to 4 questions in OPSC prelim examination will directly come from this particular polity test series. I am reminding all our OPSC test series subscribers, test series come guidance course as well as prelim and main test series subscribers. बहुत important जोटा कि आपण टोटली नेग्लेक्ट करंतुनी. एटा 100 टा क्वेश्चन इवन जो एक्सप्लेनेशन आपण देइछु सेथिरु बहुत डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्वेश्चन आछबा संभावना अधिक. Okay, then coming to the next one, which of the following statement is are correct about the cabinet mission? Sir Patrick Lawrence was successful in developing an understanding and consensus among the major political parties. And second, it is proposed 2-tier federal constitution with each tier having constitution. Then third, a province could leave a group only after the first general election held under the group constitution. Select the correct answer. It is saying correct answer. Code given below. The answer to this particular question is B, that is 3. A province could leave a particular group first general election under held. एटा आपण कहचंदी कि जो पेपर जो स्टेटमेंट 1 अछि पैट्रिक लॉरेंस वाज सक्सेसफुल इन डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग कंसेंसस हेई पारि नथिला. आपण जानथिबे कि मेजर पॉलिटिकल पार्टीज अनंग भितरे स्पेशली मुस्लिम लीग आउ इंडियन नेशनल कांग्रेस भितरे से कंसेंसस हेई पारला नै. It was proposed a 2-tier federal constitutional structure.
एटा भी नथिला 2 टायर नथिला इट वुड बी कंक्लूडिंग ए जो कैबिनेट मिशन हेल्थ थिला एटा शिमला रे हिथिला एंड यूनियन कुड इंक्लूड नॉट ओनली ब्रिटिश प्रोविंस बट आल्सो प्रिंसली स्टेट्स the union of the union and the provincial powers बहुत important एटा गोटे question then it is very important the answer is B only 3 a province could leave any group of the first then consider the following statement about sir B.N. Rao को विषय रे एटा आपन को कहा जाइथिला जो जो एटा जो क्वेश्चन थिला जो सेकंड क्वेश्चन आपन जानथिबे सेटा सेक्शन 3 सेक्शन रे डिवाइड करा दिथिला नॉट 2 टायर फेडरल इट इज सेक्शन ए देन सेक्शन बी एंड सेक्शन सी आपन जानथिबे सेक्शन ए रे को स्टेट्स थिले से माने थिले बॉम्बे मद्रास यू कैन से यूनाइटेड प्रोविंस बिहार देन सेंट्रल प्रोविंस मध्य प्रदेश ओडिशा सेक्शन बी रे थिले बेलूचिस्तान पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड सिंध और सेक्शन सी रे थिले असम बंगाल सबू थिले देन कमिंग टू द थर्ड क्वेश्चन दैट इज सर B.N. Rao he played a key role in drafting constitution of India as well as that of Burma then he was the first Indian to become a judge at the International Court of Justice एटार आंसर हबो C he is very important बर्मा रो भी से कॉन्स्टिट्यूशन एटा आपण गोटे एडिशनल इंफॉर्मेशन आमे दउचु जो सर B.N. Rao थिले नॉट ओनली इंडिया बट आल्सो बर्मा रो भी से गोटे कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग रे हेल्प करथिले एंड वेरी important and second he was a judge of the International Court of Justice then coming to the next question fourth which one of the following was not the member of the Constituent Assembly Maulana Abdul Kalam Azad Dr. Rajendra Prasad then coming M.K. Gandhi Subhash Chandra Bose Sarojini Naidu आपण जानिचंदी M.K. गांधी एंड सुभाष चंद्र बोस जो थिले से नथिले आपण कहि परिबे डायरेक्टली जो जनरली M.K. गांधी वाज नॉट द मेंबर तो आपण जदी एलिमिनेशन मेथड यूज करिवे 3 and 3 माने जुडारे 3 नाही सेटा हेई परिबो नाही 8 हेई परिबो नाही 1 and 5 अछि 3 नहीं तो it cannot be the answer you know the Subhash Chandra Bose after he 1945 जो Japanese surrender पर Subhash Chandra Bose was mysteriously we do not know about his whereabouts okay so you can say 3 and 4 is C answer is C then coming to the next one consider the following statement the socialist and the forward bloc members increased in the constituent assembly after partition increase ही नथिला socialist में एटा अंकर जो मात्रा हितिला से माने resign करथिले after partition then Muslim League had no members left in the constituent assembly एटा रे कोन थिला से Muslim League मानकर कोन से माने कहिथिले कि is are correct माने किए भी member नथिले in the constituent assembly after partition it was wrong statement so answer will be D that is this then coming to the next question that is consider the following Dr. Rajendra Prasad was the chairman of the Constituent Assembly of India Rajendra and K. Munshi was the chairman of Order of Business Committee it is very important Rajendra Prasad was the chairman of the Constituent Assembly and K. Munshi was the chairman of business committee I think dita jago correct statement achi the answer will be C then coming to the seventh question which of the following statement is or are correct regarding the proposal containing the alternation of name of the state proposal of containing the alternation of the name of the state has to be referred to the president to the legislature by the concerned state then coming to the next one that is the state legislature has to express its opinion within a specified time by the president then third the views expressed by the state do not bind the decisions of either the president or to the parliament एठारे आंसर हबो ए एक नंबर स्टेटमेंट भी ठीक अछि दुई नंबर स्टेटमेंट भी ठीक अछि एंड 3 नंबर स्टेटमेंट भी ठीक अछि बहुत इंपोर्टेंट एटा आपन को जानथिबा दरकार कि अल्टरनेशन ऑफ नेम ऑफ स्टेट में
प्रेसिडेंट एटा गोटे कॉन्सेप्ट जोटा कि आपन को रियलाइज करबा दरकार कि प्रेसिडेंट जेबे भी प्रपोजल कंटेनिंग अल्टरनेशन गोटे स्टेट रो ना परिवर्तन करबा पई गोटे स्टेट लेजिस्लेचर को फॉरवर्ड करंती देन स्टेट लेजिस्लेचर हैज टू एक्सप्रेस विद इन ए स्पेसिफाइड पीरियड यस एटा वेरी इंपोर्टेंट दिस स्टेटमेंट इज आल्सो करेक्ट कि जो गोटे पार्टिकुलर स्टेटमेंट जोटा स्टेट लेजिस्लेचर अच्छी सीए तार गोटे स्पेसिफाइड टाइम पीरियड भितरे प्रेसिडेंट को गोटे पीरियड भितरे ताकर ओपिनियन देबे किंतु जो ओपिनियन टा देबे सेटा बाइंडिंग नहीं कि प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट ऊपर बाइंडिंग नहीं तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट द आंसर इज डी कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज कंसीडर laws provided under article 2 and 3 are to be considered amendments to the constitution under article 368 एटा कहूची कि जो 368 रे जो लॉ अछि सेही अनुसार रे एटा गोटे अमेंडमेंट हबो आर्टिकल 2 और 3 जोटा कि रॉन्ग स्टेटमेंट देन एटा जदी रॉन्ग ए 1 इज रॉन्ग जदी 1 डा रॉन्ग हला तो एटा भी रॉन्ग हबो और सी डा भी रॉन्ग हबो काहे कि एटी पचारछि करेक्ट आंसर मीन्स एदर आम आंसर बी हबो नले डी हबो by the simple majority and the ordinary legislative process parliament may form a new state and alter the boundaries very important आपण जानथिबे आर्टिकल हमर जो 3 अछि सेटा स्पेशली आपण देखिबे ये आर्टिकल 4 रे कोन स्पेशली मेंशन अछि कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज दैट the laws provided under article 2 and 3 admission establishment of new states and alteration of the names and areas or boundaries etc are established are not to be considered constitutional amendment तो एटा स्पेसिफिकली जो स्टेटमेंट 2 टा अछि सेटा मेंशन अछि हमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट and first statement is wrong the answer will be B then coming to the next one then chronologically एटारे कोन कहिछि आपन को chronologically स्टेट टाकू ए जगु आपन अरेंज करिवे आपन को फर्स्ट देछि झारखंड उत्तराखंड छत्तीसगढ़ और तेलंगाना झारखंड आपन जानथिबे हमें एक्सप्लेनेशन रे परफेक्टली देइछु आपन प्लीज गो थ्रू द एक्सप्लेनेशंस इट विल बी हेल्पिंग यू द फर्स्ट रे झारखंड हमरो फर्स्ट स्टेट हेतिला जोटा कि हेतिला सेटा हेउची छत्तीसगढ़ होउची छत्तीसगढ़ केबे हेतिला 1 नवंबर 2000 रे सेकंड आम स्टेट हेतिला उत्तराखंड वी कैन से आवर 3 देन कमिंग 2 दैट इज उत्तराखंड केबे हेतिला हमरो हेतिला 9 नवंबर 2000 रे हमरो हेतिला उत्तराखंड कमिंग टू द थर्ड वन हेतिला झारखंड हेतिला 15 नवंबर 2000 माने ए तीनटा जाको जदिबा 2000 रे हेतिले किंतु से ईयर रे अलग डेट रे सेमानको फॉर्मेशन हेतिला फर्स्ट हेतिला छत्तीसगढ़ सेकंड हेतिला उत्तराखंड 1 नवंबर 9 नवंबर एंड 15 नवंबर एंड फाइनली केम इज 2nd जून 2014 that is Telangana so answer will be A then coming to the next one consider the following statements about the Governor General of Bengal according to the Regulating Act of 1773. The first Governor General of India was direct control of the Court of Directors. The governors of Madras and Bombay were kept under the Governor General of Bengal. And finally, the Governor General in Council consisted of 15 members. एठारे कौन पचारुछि आपनको को दीटा स्टेटमेंट सबु करेक्ट पचारुछि देन आपण जानथिबे द गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल वाज अंडर डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर व्हिच इज ए करेक्ट स्टेटमेंट ऑन एज पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमें ऑलरेडी क्लासेस नहीं ची आ विषय रे जो मानु प्रीलिम को मेन बैच रु क्लास नहीं थिली से माने जानि थिबे एटा गोटे करेक्ट स्टेटमेंट देन गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वेर केप्ट अंडर गवर्नर जनरल ऑफ बेंगल इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट ऑलरेडी हमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो अछि कॉन्स्टिट्यूशन रो सेटारे हमें ऑलरेडी डिस्कस करिचे किंतु तो जो थर्ड स्टेटमेंट अछि गवर्नर जनरल रो केतेटा आपनकर थिला केतेटा मेंबर थिले जनरली आपनको जो आंसर ता हबो एटा 15टा मेंबर्स नथिले सो इट वाज ए रॉन्ग स्टेटमेंट आपनकर आंसर हबो
10 habo, you can say 1 and 2 only. That is answer is A. Answer habo A. Very important. Coming to the next one, that is 11. Consider the following statement about Charter Act 1853. Very important. The executive and the legislature functions were separated under this act. एठारे कौन कहिछि कि executive और legislature was separate from the from this act, which is a correct statement. The consent of the governor general was made necessary for all legislative purposes. That is जो गवर्नर जनरल करो जो थिला से was necessary. It was necessary. So second statement is also correct. Then all vacancies in India were to be filled in by competitive examination. Yes, it is a correct statement. Few Indians were associated with legislative council. Very important. एटा जो statement 4 अच्छी सेठारे प्रॉब्लम अच्छी. आपण जानथिबे जो few Indians were associated with legislative council सेटा केबे हितला 1853 रो चार्टर एक्ट रे नथिला. इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 जो आपण जानथिबे काउंसिल ऑलरेडी हमें डिस्कस करिचे ए विषय रे. जो सर दिनाकर राव महाराजा बनारस राजा पटियाला जो एडा जो हमें डिस्कस करथिले से विषय रे अछि. तो आंसर विल बी सी 1 2 3 ओनली. ए तीनटा ही करेक्ट स्टेटमेंट. फोर्थ इज द रॉन्ग स्टेटमेंट. Then coming to the next one, consider the following statements about socialism in Indian Constitution. Before independence, awardee session of Indian National Congress aimed at establishing socialist pattern of society. It is a wrong statement. आपण जानथिबे कि awardee session of Indian National Congress केबे हितला 1955 रे हितला. And that is not before independence, that is after independence. तो जो वन डा स्टेटमेंट टा रॉन्ग होची, इनकरेक्ट अछि. तो एडी पचारिछि हमकु ऑल आर व्हिच आर इनकरेक्ट. वेरी इंपोर्टेंट. आपण मान मध्यरु बहुत जण मिस्टेक कोन करूचंती, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन ठीक से पढु नांदी, सेति पय बारंबार मिस्टेक होची. तो इनकरेक्ट कहिछि माने जोडा रे 1 नाही सेटा 100% रॉन्ग होबो. तो ए आउ बी आपनकर ऑलरेडी एलिमिनेट हे गला. आपनकु आउ दीटा चॉइस रहिला सी आउ डी. सी आउ डी भितर आपण देखंतु सोशलिस्ट वाज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 44th constitutional amendment act. Look at this statement. It is saying 44th, which is again a wrong statement. Socialist was explicitly mentioned in 42nd constitutional amendment, not 44th constitutional amendment act. Okay, then एटा भी सेकंड टा भी रॉन्ग स्टेटमेंट हला. 1 आउट 2 आपण देखि दियंतु दीटा जदी आपनकर 100% करेक्ट हला तो आपन को सिग्नल दोछि कि डी ही हमर आंसर हबो. काहे कि एटा जदी आपण देखिले जोटा 2 भी नाही सेटा भी सी डा भी हे परिबो नाही आंसर. Without reading the third statement I can reach up to the answer, that is D. एटा कौन कहिछि थर्ड स्टेटमेंट फिर भी हमें पढ़िबा. पोस्ट 1991 इंडिया's commitment to socialism has expanded. वेरी रॉन्ग. पोस्ट 1991 कौन हेतिला हम प्राइवेटाइजेशन को अधिक गलु न कि सोशलिज्म को. सोशलिज्म मींस स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी, प्राइवेटाइजेशन मींस द मार्केट ड्रिवन इकोनॉमी. सो आंसर विल बी 1 2 3, that is answer is D. Then coming to the next one, which of the following can be considered as the instance of separation of power in Indian polity? Separation of power of Indian polity एटा आपन को जानथिबे मोंटेस्क्यू रो गोटे प्रिंसिपल थिला. मोंटेस्क्यू रो प्रिंसिपल को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका सेटा को कॉपी करथिला. and आमे जो separation of power and we have copied it, borrowed it from United States. तो आपण जानथिबे separation of power एठारे कोन कहिछि आंसर कोन पचारछि which of the following can be considered instances of separation of political power in Indian polity. Indian polity रे जनरली कोन अछि executive, judiciary and legislature. तीनटा आपण कार्यपालिका, आपण विधान पालिका और ये न्यायपालिका, ये जो तीनटा अच्छी हमरो से तीनटा रे तीनटा सेपरेशन केबे हबो. आपण जानथिबे मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर,
जदि मिनिस्टर्स आर मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेचर अछंदी तो एटा तो हेलानी कहीं दी जन जागर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हबो तो ए स्टेटमेंट टा केबे भी ठीक हे परिबोनी कहीं जदि मिनिस्टर माने लेजिस्लेचर माने मिनिस्टर माने जदि से माने लेजिस्लेचर लॉ फॉर्म करिवे लेजिस्लेचर रे दे विल बी मेकिंग लॉस इन देयर ओन बेनिफिट दो एडी सेपरेशन ऑफ पावर रो कांसेप्ट आसिलानी किंतु कॉलेजियम सिस्टम ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस माने निजे जजेस गु इलेक्ट करिवे सेठारे सेपरेशन आसिला काहेकि एडी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ माने आपण देखि पारि कि गोटे गोटे पालिका माने एग्जीक्यूटिव जुडिशियरी की जदि अपॉइंट करथांदा ताहले कोन हेतांदा कोई सबसर्विएंट हेतांदा किंतु सेपरेशन थिबा जोगु माने से माने इंडिपेंडेंट दैट इज द व्हाई कॉलेजियम सिस्टम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस आपण जानथिबे एनजेएसी बिल गु जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट थिला लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन which was NJAC constitutional which constitutional amendment act NJAC सेटा को स्ट्राइक डाउन करथिले सुप्रीम कोर्ट कहिदिले कि एटा गोटे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी सेटा को वायलेट करिवो सेटा सेति पे देन थर्ड इज ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट एटा भी हे परिबोनी कहीं प्रेसिडेंट इज ए पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव से जदि लॉ बनेबा स्टार्ट करिवे दैट कैन नॉट बी सेड एज ए you can say separation of power किंतु bar of the legislature to discuss the conduct of the judges except when considering removal of the judge एटा गोटे separation of power concept हे परिबो काहेकि कि गोटे जो माने legislature अछंदी विधान पालिका रे अछंदी से माने गोटे कंडक्ट जज रो कंडक्ट ऊपर डिस्कस करि परिबेनी जो पर्यंत से जज रो रिमूवल रो रिजोल्यूशन आसुनी पार्लियामेंट सामना को तो एटा आपण सेपरेशन ऑफ पावर रे हे परिबो द आंसर विल बी 2 and 4 दैट इज आंसर इज सी सो 13 रो आंसर कोन हो सी देन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इंडिया एडॉप्टेड द स्विस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी देन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑफर्स टू इट्स सिटीजन द डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी देन The constitution is clearly states that after a period of 5 years from the first meeting of the House of the People, it will be dissolved. तो एटा हमरो क्वेश्चन 14 कहूची कि हम जति कि एबव स्टेटमेंट कोडा करेक्ट आंसर आपण कोन कहि परिबे एठारे 14 नंबर रा आंसर होची बी दैट इज 2 The Constitution of India offers its direct device of direct democracy किंतु representative democracy एटा कोन किंतु आम कोन स्विस फॉर्म ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी आमे नउचे कि नाही आमे रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को नउचु देन कमिंग जो थर्ड स्टेटमेंट अछि कॉन्स्टिट्यूशन क्लियरली स्टेट्स आफ्टर पीरियड ऑफ 5 इयर्स जनरली माने आपण जानथिबे आर्टिकल 83 कहूची हाउस ऑफ पीपल अनलेस डिसॉल्व्ड शैल कंटिन्यू टिल 5 इयर्स फ्रॉम द डेट आउरी हमरो सेथिरे भी प्रोविजन अछि इमरजेंसी प्रोविजन अछि 1 year एट ए टाइम नॉट एक्सीडिंग ए केस बियॉन्ड ए पीरियड ऑफ 6 months तो एटा रे भी मेंशन अछि सेति पय स्टेटमेंट 3 रॉन्ग हे भी हबो द आंसर विल बी बी दैट इज 2 ओनली देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सैलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एटा मध्यरु कोन सैलाइन फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फेडरल सिस्टम विथ यूनिटरी बायस Federal system with unitary bias, it is a very correct one. Secular state, it is a correct one. The universal adult franchise, it's a correct one. Dual citizenship, very wrong. कहीं हमरो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अच्छी सिंगल सिटीजनशिप गु से माने प्रमोट करचंती नाट की डुअल सिटीजनशिप तो आपण देखिबे जो डुअल सिटीजनशिप जो भी ऑप्शन रे अच्छी सेटा रॉन्ग हे गला दैट इज सी एंड डी सी और डी रॉन्ग हे गला एंड इवन हमरो बी भी रॉन्ग हे गला द आंसर विल बी ए कहीं आपण एलिमिनेशन मेथड यूज करिवे डुअल सिटीजनशिप जदी रॉन्ग हैला कहीं सिंगल सिटीजनशिप आपण जानिचंती इंडिया ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन रो सिंगल सिटीजनशिप कांसेप्ट आनीची तो डुअल सिटीजनशिप रॉन्ग हितिबा जोगु बी सी और डी एलिमिनेट हैला वी गॉट द आंसर दैट इज ए देन कमिंग टू द 16 क्वेश्चन नंबर 16 इज this consider the following statement the political part of constitution is derived from the government of India act 1935 then structural part of the constitution is largely from the British constitution which of the following is or are correct एटा रे कोन कहिछि कि एटा पॉलिटिकल पार्ट ता कोडु आनिछि एटा टोटली आमे फ्लिप कर देइतिलु
आउ बहुत जन आपण माने समीर सागर अनिता सुनीता से माने करिथिबे कि नाही एटा आंसर टा एटा दीटा जगह रॉन्ग अछि आंसर आपण जानिथिबे कि जो हमर 16 रो आंसर हबो डी काहे कि जो पॉलिटिकल पार्ट टा अछि सेटा हमें ब्रिटिश टू कॉन्स्टिट्यूशन रु हमें आनिचु आ स्ट्रक्चरल पार्ट टा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 रु आनिचु सो आंसर विल बी डी then coming to the next that is 17 consider the following procedure established by law ame british to anichu ki eta ame match the following type deitilu then fundamental rights fundamental duties sorry it is soviet constitution then coming to concurrent list that is canadian constitution and nomination of the members to rajya sabha that is irish constitution क्वेश्चन कौन पचाची which of the following given are correctly matched आपण जानिथिबे जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ एटा थिला जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन रु इंडिया आनिची फंडामेंटल ड्यूटी सोवियत कॉन्स्टिट्यूशन दैट इज करेक्ट वन देन एटा कॉन्करेंट लिस्ट आपण जानिथिबे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन ना कि कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन रु नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द राज्य सभा दैट इज आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन इट इज करेक्ट वन so answer will be 2 and 4 are correct that is b the 17 answer will be b very good jo mane bhi karithibe b then coming to the next one that is consider the following under the Berubari union case the court held that the supreme preamble is not a part of the the court held that preamble is not a part of the constitution under Kesavanathan Bharati case supreme court held that the preamble is a part of the constitution under LIC of India case supreme court held that preamble is an integral part of the constitution which of the following is or are correct तो आपन को एठी पचरा जाईछि कि कोन कोन हेतिला एटा हबो आंसर हबो डी काहे कि आपण जानि चंदी बेरुबारी यूनियन के जो 1960s रे हेतिला हमें एक्सप्लेनेशन रे परफेक्टली देइछु ठीक से पढ़ंतु जो माने भी हमर टेस्ट सीरीज हेमानु एक्सप्लेनेशन दिया हिची बेरुबारी यूनियन केस रे सुप्रीम कोर्ट कहिथिला कि सुप्रीम दिस कॉन्स्टिट्यूशन preamble is not a part of the constitution it is a correct treatment then coming to Kesavananda Bharati case एटा कहिथिले कि preamble is a part of the constitution preamble is a part of the constitution एटा करेक्टली कहिथिले then LIC जो केशवानंद भारती जजमेंट 1773 1973 sorry then coming to the LIC judgment हेतिला 1995 रे आ सेटारे कहिथिले so preamble is a integral part of the constitution so answer is D then coming to the next one consider the following statement the JVP committee formally rejected the language as the basis of organization of the states and then Dhar commission recommended reorganization of states on basis of linguistic factors एटा कहिछि आपनकु 19 टा कहिछि कि एटा मध्यरु कोटा करेक्ट स्टेटमेंट जेवीपी कमिटी फॉर्मली रिजेक्टेड आपण जानथिबे जेवीपी दैट इज जवाहरलाल नेहरू वल्लभ भाई पटेल एंड पताबी सीतारामैया एटार कमिटी हेतिला से माने रिजेक्ट करथिले लैंग्वेज इज द बेस ऑफ reorganization of the state एटा की perfectly correct treatment थिला धर commission recommended reorganization of the basis of linguistic factor it is a wrong statement because से माने धर commission जो थिला धर commission जो थिला सेटा कोन कहिथिले से कहिथिले जे administrative convenience ना कि linguistic factor should be taken into consideration for reorganization of states then coming to the next 20 consider the following the objective resolution residuary powers of the to the states according to the objective resolution India was to attain its rightful and honored place in the world it is correct then residuary powers to the state then objective resolution clearly emphasized on the sovereign right of India on land air and sea हमको पचारि चंती कि एटारे कोन कोन करेक्ट स्टेटमेंट अछि आपण जानथिबे ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया जाइथिला सेटा कहिथिला इट इज करेक्ट स्टेटमेंट स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट द ऑब्जेक्टिव रेसिडुअरी पावर स्टेट अनु दिया जाउ बोली कुआ जाइथिला किंतु परे जेतलो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एटा डिस्कशन करले रेसिडुअरी पावर्स को कोन हला सेंटर को ट्रांसफर हला फाइनली हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे आ सेकंड भी करेक्ट स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन इंडिया वाज
to attain rightful and honored place एटा सेकंड टा भी करेक्ट स्टेटमेंट हबो जो थारे 1 and 2 अछि सेटा 100% करेक्ट आंसर हबो 1 and 2 without reading third statement also you can reach the answer that is D. The objective resolution clearly emphasize sovereignty of right India land sea and air. It is a absolutely correct statement. Then coming to the next one, that is which one of the following is or are included in the meaning of the term republic. The source of the authority under the constitution is with the people of India, then absence of any privileged class, all public officers being open to every citizen. तो एठारे आपण आंसर कहिबार थिला कि आपण कोन कोन एथिरि मध्यरु करेक्ट स्टेटमेंट आपण जानथिबे रिपब्लिक रो कांसेप्ट ता कोन रिपब्लिक रो कांसेप्ट ता होची ऑल सोर्स ऑफ अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन रेस्ट विथ द पीपल ऑफ इंडिया वेरी वेरी इंपोर्टेंट देन एसेंस ऑफ एनी प्रिविलेज रिपब्लिक रे कोई उच्च नीच जो प्रिविलेज क्लास अछि सेटा रहिबो नाही सेटा होची इंपोर्टेंट कांसेप्ट रिपब्लिक रो तो इट इज वेरी वेरी इंपोर्टेंट ऑल पब्लिक ऑफिसेस आर बीइंग ओपन टू एवरी सिटीजन्स तो सेटा भी बहुत बहुत इंपोर्टेंट तो आंसर विल बी डी. Then coming to the next one, that is 22. Consider the following statement about liberty. Liberty means absence of restraint of activities of individuals. Then liberty is an Indian constitution is absolute. आपण जानथिबे नथिंग इज एब्सोल्यूट आपण जानथिबे कोई भी लिबर्टी एब्सोल्यूट नै लिबर्टीज आर ऑलवेज क्वालिफाइड आपण निज लिबर्टी पई अन्य को केबे बेले आपण प्रॉब्लम देई परिबे नाही सेटा ही लिबर्टी रो मूल मंत्र सेटा ही लिबर्टी रो मूल कांसेप्ट सो लिबर्टी इज एब्सोल्यूट जो लिखा है एटा एब्सोल्युटली रॉन्ग स्टेटमेंट दैट इज 2 जदी रॉन्ग हला बी भी रॉन्ग हबो सी भी रॉन्ग हबो तो आंसर आपण कोन कहि परिबे आंसर इज ए माने आपण दीटा एलिमिनेट कर देले देन लिबर्टी मींस एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट ऑन एक्टिविटीज ऑफ द इंडिविजुअल लिबर्टी कोन एब्सेंस ऑफ रिस्ट्रेंट माने स्टेट रो किछि माने गोटे तरीकार गोटे रेस्ट्रिक्शंस रहिबोनी सो जोटा कि एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट द आंसर इज ए. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रीएम्बल ऑफ इंडिया. Liberty of worship has been given in the preamble. It is absolutely correct statement. आपण जानथिबे जो preamble रे दिया हिची आपनकर liberty विषय रे सेटा important कुआ हिची then it helps the जो freedom of belief faith worship जो अछि सेटा clearly mention अछि then it helps in integral and interpretation of the constitution where language is found to be ambiguous. Yes आपण जानथिबे सुप्रीम कोर्ट रो different जजमेंट रे सुप्रीम कोर्ट प्रीएम्बल को सेमानक गाइडिंग प्रिंसिपल हिसाब रे देखि चंती द आंसर विल बी सी 23 रो आंसर ता हबो सी. देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 24 रो कोन कहि चंती द डॉक्ट्रिन कंसीडर द फॉलोइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज रिलेटेड टू फेडरलिज्म देन डॉक्ट्रिन ऑफ pith and substance is related to list of the 7th schedule. The doctrine of colorable legislation puts limit on the legislature capacity to enact laws which are outside the competence given is and above are correct. एठा मध्यरु कोटा आपनकु करेक्ट कहिबार थिला दैट इज आंसर इज this is आपण जानथिबे doctrine of harmonious construction is related to it is not related to federalism. एटा हबो रॉन्ग स्टेटमेंट. एटा जो अछि सेकंड स्टेटमेंट द डॉक्ट्रिन ऑफ pith of substance is related to list and 7th schedule. It is very correct. एटा जो अछि करेक्ट स्टेटमेंट अछि. Then the doctrine of colorable legislation is limit on the legislature capacity to enact laws which are outside the competition. एटा भी करेक्ट अछि. 2 और 3 करेक्ट अछि. द 24 रो आंसर ता हबो बी. Then coming to the next one that is 25. Consider the following statement about federalism. The supremacy of the constitution is a must for federalism. Then the legal supremacy of the court is essential for the federal system. The state in India are indestructible. एटा आपण देखिबे एटा जो स्टेटमेंट 3 डा अछि the state in India are indestructible. It is a very wrong statement. 3 जोटा रे अछि सेटा आपण करेक्टली माने एलिमिनेट कर दियंतु. डी आउ ए एलिमिनेट हे जाय हम पाखरे अछि डी दा ऑप्शन either बी होबो आंसर और सी होबो.
So for there is equality of that is equality of rights of states in Indian constitution. No, there is no equality of rights. There is nothing called as equality of rights in Indian constitution. Statement 4 टा भी wrong हबो. तो हमर आंसर ही जीवो कोन एठी 25 नंबर रो हमर आंसर ही जीवो बी. That is 1 and 2. 1 and 2 हबो हमर आंसर काहेकि 3 और 4 wrong अछि. So this was the discussion of part 1 of our test series. Those who want to join fast. रिविजन आपण जल्दी से जल्दी जॉइन करले आपण रिविजन ठीक से करि परिबे. आपण देखुचंदी आमे टोटली ओपीएससी स्टैंडर्ड रो क्वेश्चन पकोउचु. आ जदी आपण चाहुचंदी फटाफट जॉइन करंतु. शेड्यूल ऑलरेडी हमरो डिस्क्रिप्शन रे अछि एंड यू कैन जॉइन एंड यू कैन डू रिवाइज एज सुन एज पॉसिबल. मु कहूची हमरो जति की सब टेस्ट सीरीज सब्सक्राइबर अछंदी प्रिलिम कम मेन बैच प्रिलिम टेस्ट सीरीज ब्रांच एंड प्रिलिम गाइडेंस कोर्स जो माने भी अछंदी से माने एटा को बारंबार रिवाइज करंतु. एई टेस्ट पॉलिटी टेस्ट रो किछि न हले 3 रु 4 टा क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमरो ओपीएससी रे आसीबार चांसेस अधिक. And it is very important, and if you think this particular video is informative, then do give a like. Thank you very much.